Okay, all right. With that, let's go ahead and get started. Very quickly, I want to walk you guys through the update that I have made in our data set. So हम exactly CS334 data sets ही use कर रहे हैं on Kaggle. I have added three CSV files in the folder students data. If you revert to the very first version of this notebook, you should be able to retrieve this as well. All right, so I'm going to quickly show you all of the three data frames that we are working with. So हमारे पास students का data है. You have 20 rows and you have 5 columns against each row. You have the student ID, the name of the student, which are again pretty much just arbitrary values, the department of the student, the semester, and the student's GPA. We would also want to note कि जो index है वो simply 0 से 19 तक ही आपके integer values हैं. This is synthetically generated data, just by the way. Then you have a data frame of courses in which we have 10 different courses with 10 unique course IDs. You have course names, the credit hours for that course, and the instructor name. We have a third data frame that we will be using today, enrollments. Enrollments के अंदर we have 60 rows and you have 5 columns. The unique student ID, the unique course ID, the grade the student has obtained in the course, student key attendance, and assignment score. And then I merge all three data frames into one DF. Just may we have 60 rows and we have all of these columns available to us. Primarily, this is the data frame that we will be working with, but I will walk you through merging once again towards the end. With that, let's get started. A lot of students bring this up every now and again कि pandas exactly कैसे टेस्ट होगी तो I will clarify that we will not directly ask you to write code, neither in this exam nor in your exam 2 or your final exam, inshallah, unless otherwise, in which case we will make an announcement. Since हम आपको code directly लिखने को नहीं कहते तो इसका ये मतलब नहीं है कि you do not practice code, because ultimately we see that only students who have practiced pandas are able to tackle these questions. You should be able to look at a command and tell us exactly what that command will do for you. Firstly. Secondly, if you are given a piece of code, so you should be able to, yeah, is there a question? Yes, Arib, आप please mic on करके पूछ लें. Man. Okay, so I wanted Arib, I can't hear you clearly for some reason. Maybe you're blocking your hello, mic. hello. Yeah, I can hear you now. बताएं. Okay, so I want to know the practice exam that was uploaded around a week ago. How much does Yes. that align with what's actually going to come? Because in that exam, there were portions that were asking us to write like tiny parts of code. Right. Yeah, the difference between that exam and this is कि उस वक्त we were asking students to write code, and if I'm not wrong, हमने syntax के लिए एक reference sheet भी दी थी students को. We will not give you a reference sheet for syntax, but to be fair, we will not ask you to directly write code either. But बाकी essentially concepts उसमें वही test हो रहे हैं. Is that okay? Yeah, that makes sense. Thank you. No worries. No worries. So आप लोगों को अगर data frame दिया हुआ है and then you're given a piece of code, you should be able to dry run your code on a data frame. To be fair, हम आपको data frames बहुत बड़े नहीं देंगे for code snippets as such. So you shouldn't have to spend a lot of time on that questions, as much as rather you should be able to tell and decipher exactly what that command is doing for you. With that being said, you have to have a very strong grip over pandas, especially for this exam.
So we will walk over a few queries from each section of Pandas because mostly this is what people brought up in the form that I circulated. So let's write down a few pieces of code जो अभी आपके पास version available है notebook का इसके अंदर solutions are not provided to you. I will provide the solutions after the tutorial though, but at each question, I want you to definitely pause and think about how we're going to solve this. So, you are required to filter out all the students with a GPA of greater than 3.0 that are in the CS department. I will give you guys a few seconds to think about this. At least try and write this command down, and then we will discuss it and move on. So आपने ये वाला डेटा फ्रेम यूज करना है इसके लिए. What do we need to do? Okay, would someone like to volunteer a solution? Okay, no worries. Yes, Arib, go on. Let's just say A is equal to like df, and then we can make a boolean df bracket GPA is greater than 3.0. That is going to be our boolean, and that's just going to go into the argument of df, and that's going to be stored as a variable. That's absolutely correct. So आप कह रहे हैं कि इसको हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लें. Sure, we can do it. Let's call it condition 1. Okay, what do we do next? That should be it. No, essentially हमारे पास aggregated condition बनेगी. You're Oh, halfway my there. bad, my bad, my bad, my bad, Yeah. my bad. Department is equal to string CS. Like df department is equal to string CS, or is in CS. So इसको हम इसी के अंदर append कर देते हैं rather than having two different lines of code. So this is the and that you will be using df department. या हम इसको directly भी CS कर सकते हैं या हम इसको .in भी कर सकते हैं. So when you see this command, you should know exactly what it does for you as well. Alternatively, if I want to filter out the students जिनका GPA 3 से ज़्यादा है, or they are from the CS department, so this is what I will use for. Sorry guys, my something is up with my keyboard. लेकिन आप straight line use करते हैं or के लिए. Okay. I have another command written right over here. df and then df instructor dot is in Dr. Khan, comma Dr. Malik. इसको मैंने array pass की हुई है. Can someone tell me what this command will do for you? तो essentially ये आपके data frame में से उन rows को filter out कर देगा where the instructor is either equal to Dr. Khan or the instructor is equal to Dr. Malik, and that's it. The good thing about is in is कि आप इसको array pass कर सकते हैं values की instead of just having multiple conditions in this format with ors in between. So this simplifies that task for you. Essentially हमारे data frame में Dr. Khan के against कोई entry नहीं थी. So this is what my result is. Since someone reached out to me about this, I will reiterate कि जब भी आपके data frame के ऊपर कोई filtering operation perform होता है तो by default आपके indexes update नहीं होते. So my resultant data frame has row indexes corresponding to the ones in my initial data frame. So I can see that rows 0, 1, 7, 9, 11, etc. were filtered out. Although, and we will not test this for now, अगर आप डॉट रीसेट इंडेक्स की कमांड यूज करें तो ये इसको रीसेट कर देता है और जो प्रीवियस इंडेक्स होता है उसका सेपरेट कॉलम क्रिएट कर देता है.
Okay, you are required to find all the students who scored above 80 in assignments and have an attendance greater than or equal to 90. I will again pause over here for a few seconds, but then I'm just gonna go ahead and solve this. Do try it out on your own. Can someone tell me what the output of this command is going to be? Rather, what is the format of this output expected to be? So guys, essentially ये command आपको rows filter out करके नहीं return करती, rather it gives you a boolean array or a boolean series जिसमें true होता है in all the instances of the data frame where this condition holds true and false otherwise. So essentially इस command की output की length is exactly the same as the length of your original data frame. When I take this and pass it to my data frame, तो फिर जिन रोज के अगेंस्ट ट्रू होता है ये उन रोज को फिल्टर आउट कर देता है ऑटोमेटिकली. With that being said, this is our solution. And DF attendance. Yeah, Sirish, go ahead. In the first question, we could have used lock as well. The first question. This one? No, this one, right? Yeah. Yeah, absolutely. See, works exactly the same way. The thing is, guys, कि lock आपको allow करता है कि आप first argument में essentially, let me just, since we've opened this discussion, आप rows select करते हैं and then आप columns select करते हैं. Rows को select करने के लिए I will use either row labels और conditions. Row labels के ऊपर मैं slices भी डाल सकती हूँ. I can pass a list of row labels as well, or I can essentially just add a condition which helps me filter out certain rows. On the other hand, it is important for you to know कि lock को आप इस तरह भी use कर सकते हैं. So essentially, what is the difference between these commands? बल्कि एक last हम ये वाली भी add कर लेते हैं. पहली command में I have something in place of rows and something in place of columns. Second command में I have something in place of rows and then I have a comma and nothing for columns. In which case वो basically सारे columns को select कर लेगा. The third command is essentially 100% the same as the second command. Exactly ये वही करेगा जो second command में हो रहा है. Whatever condition you have on the rows or whatever slices you have or labels you have to filter out, ये उन्हें filter out कर लेगा for all columns. And then fourth command के अंदर I'm passing it nothing for rows, so it will select all the rows by default and columns के मैंने जो labels pass किए हैं ये सिर्फ उन्हें select करेगा. What I have right over here is actually an example of the third method of using lock. I could have added a comma and it will still work exactly the same. Comma ke आगे I can select a certain number of columns जिनके लिए I would have to pass their labels and then it will just filter those out. Sarish, I hope that answers your question. Yeah, thank you. No worries. With that being said, I will quickly clarify कि guys, ilock में अगर मैं यही चीज pass करूँ तो this command will fail. Can someone tell me why? Because that's position based. Yeah, excellent. So that is position based. वो indexes ढूंढ रहा है और मैं उसे rows के ऊपर labels वाली condition pass कर रही हूँ. So ये जो conditioning वाली चीज है ये ilock नहीं allow करता, ये सिर्फ lock allow करता है आपको. With that, let's move on. I will leave this one command for you guys to try out on your own, and I will move on to this one
because ultimately you should know how dot apply and lambda functions work as well. So to quickly recall, lambda functions are one line functions जो आप dot apply को directly pass कर सकते हैं. इसके अंदर आपके पास वेल बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है एंड एक रिटर्न वैल्यू है. यू ओनली डू दिस फॉर फंक्शंस जो एक लाइन में डिफाइन हो सकते हैं. So I will pause over here for a few seconds and give you guys time to think about what this piece of code is doing for you. All the gates pass which have A, B, C. Other is fail. That is correct. Areeb, do you have something to add या आपका भी यही आंसर था? Perhaps maybe just it makes a new column that in the DF data frame that stores all the results. But Yeah, yeah, perfect. Perfect. तो ये न्यू कॉलम भी क्रिएट करके देगा. सो हम ग्रेड के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं जो सिंपल फिल्टर लगा के आपको वैल्यूज अकॉर्डिंगली पास या फेल की रिटर्न करता है. सो इफ g is equal to a or b or c, you will store pass, otherwise you will store fail. So essentially this is what your data frame looks like now. With that, let's move on to lock and iLock. On a preliminary level, we have gone over this. But let's think about it. What does the following command do for you? Students.lock or मैंने इसको 1001 pass किया हुआ है and nothing else. Can someone answer this for me? It returns this row Yeah, it returns the row. Which row does it return? with 1001. Yeah, that is correct. So अब हम एक quick we'll take a quick look over the student's data frame. So I will slightly zoom out and I will ask you guys कि ये कौन सी row return करेगी command. Think about this, take a few seconds, and um Iman, I'm so sorry, but आपके जो भी questions वगैरह हो and stuff, आप please mic on करके बता दिया करें, because if I shift, तो I am essentially blocking this view. Typically, I miss questions in the chat otherwise. Yes, Areeb, go ahead. can you display the code one more time? Yes. Students.lock and lock को pass हो रहा है 1001. So what I row have a should question that over give here. me? Yes? I have a question over here. Yeah. I understand that in the first argument of lock we get row wise conditionals, right? Yep. And all right, Row-wise so conditions or row-wise labels. row wise, right? So in this case, why or like why is it considering student ID? Why is it not considering the index? So that is essentially the point. This command will fail. Sorry, you've actually gotten there essentially. ये command fail हो जाएगी. This command will fail because when it iterates over my index labels, which are just integers ranged from 0 up until 19, तो उसको 1001 के against कुछ नहीं मिलेगा. On the other hand, if I were to pass, suppose 10 to it, so then it will actually work. And ये वाला output मुझे मिलेगा. So if I go ahead and I reset my index though, index equals student ID.
Give me a quick second. Student ID तो exist करता है. Chale, I will add it to your contents and I will release it. But I really want you guys to understand though कि अगर मेरे index में student ID होती as opposed to my simple integer index labels, so then this command would work. It will no longer fail. Let's look at another though. What does the following command do? Students.ilog and I have 0, colon 3, and then I have 1, 3, and 4. With regards to this data frame, what is my expected output? It will give This, this sh- 0, 1, 2 rows and first, third, and fourth column. Excellent. So 0, 1, 2, ये 3 rows आपके पास select हो जाएंगी, and columns 1, which is name, 3, which is semester, and 4, which is GPA. This will be your output. And I have another question for you guys. Again, हम यहाँ पे display कर देते हैं students.head. How will the outputs of the following two commands differ? Again, take a few seconds, think about this. How are these two commands different from each other? Or rather, क्या इनका output same ही होगा? Lock Since is inclusive, iLock is not. So Perfect. This is what I was looking for. So ये two important differences हैं between lock and iLock. Lock iterate करता है labels के ऊपर, iLock iterate करता है indexes के ऊपर. Secondly, lock is inclusive, iLock is exclusive. और यहाँ पे बात सिर्फ ending की हो रही है, third index की. So essentially, students.iLock select करेगा only three rows 0, 1, and 2, like we observed over here. But on the other hand, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, comma. On the other hand, if I use lock, तो वो 0, 1, 2, 3 ये 4 rows select करेगा. Are there any questions up until this point? Okay, moving on. What does the following command do? Again, think about it. वैसे तो we have gone over conditions as well, but what do you think the expected output for this command is? हम students के data frame की ही first कुछ entries देख लेते हैं. वो आपने आई लॉग की दूसरी कंडीशन जो बताई थी वो एक्सप्लेन कर देंगे आप? iLog की दूसरी condition, no, एक I'm तो इंडेक्स sorry, I वाली don't थी get your point. और इंडेक्स वाली थी और दूसरी कौन सी थी? Yes, of course. Lock and iLock में दो essential differences हैं. Lock iterate करता है row के index labels के ऊपर and column के names के ऊपर. iLock operate करता है rows के भी indexes के ऊपर only, and then columns के भी indexes पे. The second key difference is कि iLock के अंदर जो आपकी slicing में last index होता है वो included नहीं होता. On the other hand, lock के अंदर last index भी included होता है. So if I just do dot iLock 0 till 3, so you will observe कि iLock ने rows 1, 2, and 3 select की. 3 was not included itself. Sorry, 0, 1, and 2 select की. And when I did it for lock, तो उसने 3 को भी select किया है. That's the difference. Okay, circling back, can someone tell me what the expected output of this command is? it will give all the columns for Are student you number sure 5. it will give you all And the columns? no, GPA and Yeah, just GPA. absolutely. सिर्फ जीपीए देगा, only जीपीए. क्योंकि पहले आपने इसको एक कंडीशन पास की, that student's name double equal student 5. मतलब उसने ये रो सेलेक्ट कर ली, and then you ask it to select only the GPA. तो ये essentially 2.91 return करेगा. All right. Um,
Let's move on. Select the 5th to अगर the हम लॉक 10th. Yes, go ahead. अगर हम जो अगर एक कंडीशन पे फिल्टर करते हैं Mm-hmm. और उसके बाद आई लॉक और लॉक यूज करते हैं तो तभी वो सेम एंट्रीज आएंगी। लेट्स से अगर हम फिल्टर करते हैं स्टूडेंट विद जीपीए ग्रेटर देन 3 तो एक नया डाटा फ्रेम बनेगा ना, और उस डाटा फ्रेम पे अगर हम करते हैं तो या बिल्कुल एब्सोल्युटली, बल्कि ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसको हम ट्राई भी करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज हमने फिल्टर आउट किए वो स्टूडेंट्स जिनका जीपीए वाज ग्रेटर देन 3.5 एंड देन हमने उसको न्यू डेटा फ्रेम में सेव कर लिया। ये तो एक्चुअली बहुत ही कम हो गए हैं स्टूडेंट्स। 3.4 करके देख लेते हैं। यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गोना सेटल फॉर दिस। तो अब आप देखें कि जो इंडेक्स है उसके लेबल्स आर 5, 13, 14 एंड 15। तो व्हाई डोंट वी ट्राई दिस आउट। डॉट लॉक 13, व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? ये मुझे ये वाली पूरी रो रिटर्न करेगा। What is this going to give me? Guys, anyone, what is this going to give me? It's going to give me an immediate error, people. Yes, there is क्योंकि no जब row वो as 1 ढूंढेगा तो उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 5 है, 13 है, 14 है एंड 15 है। I have another very cool question. We've tested something similar before. अब ये मुझे कितनी रोज रिटर्न करेगा? 3, आई थिंक 13 तक 2 रोज नहीं होंगी। No, no, 5 3 और rows 13। होंगी। 5, 10, 13 and 14. yeah, ओह perfect. सॉरी, हाँ 14 तक। या तो ये 14 को itself भी इंक्लूड करेगा essentially. हम्म। On the other hand, what will this command give me? 5 and 13. It will give you an immediate error. Oh yeah. Yeah. Because ये क्योंकि 0 वो से लेके इंडेक्स 14 तक इंडेक्सेस ढूंढ रहा है, या एंड हमारे रिजल्ट में है ही सिर्फ 4 इंडेक्सेस। You know, it's like this is like a dictionary. I'll tell you how. 0th index के against you have 5, and then first index के against you have 13, second index के against you have 14, and third index के against you have 15. So what essentially happens is कि dot ये lock आई लॉक के अंदर है iterate ना। करता है, wait a second, dot lock iterate करेगा इन labels के ऊपर 5, 13, 14, 15. Dot ilock operate करेगा इन indexes के ऊपर 0, 1, 2, 3. Yes, now go ahead. हाँ मेरा ये क्वेश्चन था, तो आप दोबारा बता देंगे कि लॉक जो है वो करेगा 5 13 पे, इवन दो चूंकि हमारा नया डाटा फ्रेम है उसके अंदर इंडेक्स चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने तो वो फिल्टर आउट कर लिया। हमारा जो नया डेटा फ्रेम है उसमें लाइक आई टोल्ड यू गाइस, इंडेक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट रीसेट नहीं होता, आपको मैन्युअली कमांड दे के उसको रीसेट करना पड़ता है। सो जब आप कोई फिल्टरिंग वगैरह करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अगेंस्ट जो इंडेक्स होता है वो रिटेन होता है। इफ यू राइट डॉट रीसेट इंडेक्स आफ्टर योर कमांड तो फिर वो रीसेट होके उसको 0, 1, 2, 3 कर देता है। लेकिन जो आई लॉक है वो होगा, मतलब वो तो इंडेक्स भी करेगा ना। यस एब्सोल्युटली, iloc इंडेक्स पे ही ऑपरेट करेगा। इसीलिए ये मुझे, अच्छा इसने मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि इसने इसेंशियली ये देखा कि जब तक इट इज लेस देन 14 तब तक इट कंटिन्यूज टू गो ओवर योर डेटा फ्रेम, एंड सिंस 0, 1, 2, 3 ये सारे लेस देन 14 है तो इट वर्क्स, दैट्स इम्पोर्टेंट एक्चुअली। इफ आई गिव इट 2 ऑन द अदर हैंड तो फिर मुझे ये सिर्फ 5 और 13 वाली रोज रिटर्न करेगा बिकॉज दोज आर माई फर्स्ट 2 रोज। Okay, so try and select the 5th to 10th rows of the data showing only name, course name, and grade. You can actually try doing this using lock, and then you can try doing this using iLock as well. Data frame हम display कर देते हैं.
We can use lock here. Yeah, and how do we use lock? 5 colon and then 10, and then the names of the columns, which is no name, course name, and grade. Yes, but you have to make sure कि आप इन्हें लिस्ट की फॉर्म में पास कर रहे Yeah, हैं. yeah, yeah. So yeah, you are absolutely right. This will give you your output जो हमें चाहिए थी. How do I do this using iLog though? You could do 5 to 11. 5 to 11, perfect. How do I select these columns? The columns are Uh, going to be the corresponding Six, the corresponding numbers. Yeah, you both are right. Corresponding जो index number बनता है. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yeah, 5. And then next वाले का क्या 9, बनता है? 9, 9 9. and Uh, grade is 1, 2, 2, 2. 2. Perfect. Yeah. So ये भी आपको essentially वही output दे रहा है. Perfect. Are there any questions up until this point? Okay, using iLog, how are you going to print the last three rows? सवाल था मेरा एक Yes, go ahead. if I'm using something like iLock but with a condition. I'm sorry if this has been Oh, answered iLog before. तो doesn't work with the condition. हाँ तो I ये होगा कि पहले मैं iLock से उसको ट्रांसफर करूँ तो फिर मैं कंडीशन लगाऊँ उसके ऊपर in अच्छा, another आप line. कंडीशन जो है वो आपको लॉक अलाउ करता है. यहाँ जहाँ पे आप रोज पास कर रहे हैं वहां पे आप कंडीशन पास कर दें. अगर iLog में आप कंडीशन पास करेंगे तो दैट विल नॉट वर्क. सो अगर लॉक में आपने कुछ लगाना iLog पड़ता है. यूज करना है विद द कंडीशन तो आपको एक्चुअली एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप कंडीशन लगा के रिजल्ट स्टोर कर लें. फिर उस नए डेटा फ्रेम के ऊपर यू विल यूज iLog. मेक सेंस? लॉक में कैसे यूज कर सकते हैं कंडीशन. लॉक में आप यूज कर सकते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस हम जीपीए वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं. इज ग्रेटर देन 3.5. सो इसने सारे कॉलम सेलेक्ट कर दिए. इवन इफ आई डोंट राइट अ कॉमा तो भी ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर देगा. इफ आई डू ऐड अ कॉमा तो उसके आगे आई कैन जस्ट डू समथिंग विद माय कॉलम्स एज वेल. इसकी एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं. ग्रेड till name. What do you guys think the output of this command should be? It will give all the columns from grade to name. Inclusive, yes. Inclusive, yes. So ये inclusivity वाला rule actually rows के लिए भी follow करता है, columns के लिए भी. Abdullah, is that clear to you? हाँ जी, that's clear. Perfect. So हम last three rows कैसे print करेंगे using iLog? Could you print the data set? Yeah, sure. If it's all right, I'm just gonna print the first few entries though. या हम tail print कर लेते हैं actually. So इसको करने का एक तरीका तो ये है कि मैं 57 onwards कर दूं. And well, then I can just select all the columns. But ये थोड़ा ज़्यादा hard code हो गया. What if I didn't know the number of rows directly like this? So then I will do length of my data frame -3 till end. And that will give you the exact same output. Here, let's move on towards grouping and aggregation. But पहले हम I इसमें will, डायरेक्टली yeah, -3 नहीं कर सकते. कैसे नहीं कर सकते अब्दुल्ला? Can't we do directly -3 वो फिर थर्ड लास्ट से शुरू कर. Oh, you are absolutely right. But ये reverse नहीं करेगा? नहीं करेगा reverse. Yeah, so this will work as well. अगर हम इसको -1 दें तो ये last index पे चला जाता है. -2 second last and so on and so forth. It's much better actually, much neater. Guys, before I move on towards grouping and aggregation, I will ask again, are there any questions for lock and iLock?
Is it like sufficient if we understand all these commands for iLog and log for exam? It is not sufficient for you to understand these commands. It is, however, sufficient कि अगर आपने ये commands try करके देखी हुई हैं, if you have practiced them in code, तो then that is sufficient for you. क्योंकि जो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो आपको भूल जाएगा थोड़ी देर तक. So just guys, इसके लिए the best way moving forward is just to go over tutorial की notebooks ही. Really focus on tutorials 2 and 4. Especially 4, since 2 में फिर भी we have covered more basic commands. 4 में we have worked on regex and string operations. I've seen people struggle there. Yes, Pennies, go ahead. It was mentioned that we won't be asked to write code, but for example, अगर question आता है use lock and print the last three rows. So will we write that one line of code or वो भी नहीं आ रहा? आपको आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा. हम आपसे थोड़ा सा भी कोड नहीं लिखवाएंगे. Okay, okay, thank you. No worries. I have a question regarding what can come from regex. So, Yes. like, right now we're told that we're not going to be like asked to write any code, but let's just say regex का कुछ ना कुछ आ जाए. How would that look like? अगर आपको एक regex expression दिया हुआ है, तो you should know what it will filter out. या you should know what exactly it will match. अगर आपको कोई string दिया हुआ है और आपको एक regex दिया हुआ है, तो you should know how to run that regex on that string. You should know what it is looking for. You should know कि ये match क्या करेगा. Alternatively, regex आपको लिखना भी आना चाहिए. हम string operations के लिए code नहीं test करेंगे. Essentially, we will not ask you to write down code. Just then you have commands like dot contains के अंदर you can set regex to true. We will not ask you to write this down. लेकिन उसमें अगर हमने आपको कोई regex दे दिया है, तो you should know कि वो किन किन rows को match करेगा. Does that make sense? So guys, इधर I will reiterate as well कि regex आपको लिखना आना चाहिए. इसकी हमने क्लास में भी प्रैक्टिस की है. And while I have included a few questions on regex in today's tutorial, I will really emphasize कि regex के लिए tutorial 4 की notebook को एक दफ़ा ज़रूर revisit करें. अगर आपसे वो सारे सवाल solve हो सकते हैं, तो genuinely there's nothing in the exam that you cannot solve for regex. It's not that hard. Yes, Amna. In this command, like what if we remove the colon, तो तब क्या हमें print करेगा? And just like -3. What do you think it will give you? I'm like confused. अच्छा, so ये essentially exactly सिर्फ एक ही रो को select करेगा जिसका index -3 है. And -3 means third last. तो ये जाके सिर्फ third last row को select कर देगा. Does that make sense? Yes, thank you. Just like alternatively इसको अगर मैं 0 pass करूँ, तो ये first row को select करके as an object इस तरह print कर देगा. Are there any other questions at this point? Okay, we're going to हमें move on. रजिस का कितना कोड लिखना चाहिए? Sorry, Uzair, come again? मतलब आपने कहा ना रजिस का कोड लिखना चाहिए, तो कितना मैंने कहा मतलब कि कितना regex का एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, कोड हम अगेन नहीं टेस्ट कर रहे. हम आपको pandas कमांड्स नहीं लिखने को कहेंगे, बट regex आपको उतनी नहीं, लिखनी जी आनी जी, चाहिए जितनी लेक्चर के अंदर कवर्ड है. इवन ट्यूटोरियल में भी जितनी कवर्ड है उतनी भी आपको आनी चाहिए. कुछ बहुत एक्सेप्शनली नया हमने नहीं कवर किया regex में इन आवर ट्यूटोरियल. So regex आपको उतनी लिखनी आनी चाहिए जितनी हमने कवर किया. But there is a lot more to regex which we haven't even covered. I will walk you guys over some basic commands again. Okay, so let's move on towards grouping and aggregation. Find the average GPA for each department. इसके लिए तो we're actually gonna write code down, but I will give you guys a few seconds and the data frame to think about this. With that, I will tell you कि grouping की command is df.groupby.
Okay, would someone like to volunteer a solution? Yes, Arib. Yes, Arib. बताएं. Audible? Hello? Yes, I can Yeah, hear you. right. So it'll be group by departments, and values would be GPA and and dot mean. Perfect. So this is exactly what we were looking for. And guys, इसको करने के आपके पास और भी methods हैं. You can directly group on. I believe कि ये इस तरह भी work कर जाना चाहिए if I'm not wrong. अच्छा ये इस तरह नहीं work करेगा. My bad. Typically this is the convention that I do follow. Alternatively अगर आप dot aggregate लिखें and then आप इसको np dot mean pass कर दें तो that will work as well. Let's see what happens if I change this into a list. So अब इसने data frame वाला format कर दिया. पहले ये list return कर रहा था. Yes, Areeb, go ahead. In the previous combination, if we put GPA in front, if we keep it as a if we keep it as a list, then we won't get then we get a data frame back and not a series. Those cases when it should work. Yeah. So essentially, abhi I am giving it GPA as a single variable within जो मैं data frame को reference कर रही हूँ. So ये series बना के दे रहा है. If alternatively मैं GPA को as a list pass करूँ, तो ये मुझे data frame return कर देगा. Since I'm passing it as a list, why don't I try adding something else to the list as well? See, so now it's giving me the average GPA and average attendance for each department. Does that make sense? I will show you guys another example for this actually. So हम दोबारा से data frame देख लेते हैं, and now you would want to compute the average assignment score for each course. So group up करेंगे on the basis of course. Oh, we have course name, and then you will select assignment score dot mean. As simple as that. What does the following command do? Students dot group by. Actually, let me just display students का data frame for you over here. Dot group by department dot aggregate, and अब देखें aggregate के अंदर मैंने इसको क्या क्या पास किया है. Average GPA equals GPA comma mean, max GPA equals GPA comma max, count equals student ID dot count. So just take a few seconds and think about this. Yes, Uzair? Pivot table भी included है ना? Okay. Yes, absolutely. Pivot tables be included. And I will walk you guys over 1 to 2 examples, Abhi. Yes, yes. So ये code क्या return करेगा? What is the expected functionality of this piece of code? Really? No one can comment on that? I thought it was pretty self-explanatory. Yes, Arib? Yes, Arib, can you hear me? Yeah, hello. Yeah, Yeah, each row is going to be the respective department, and the columns are just going to be the respective functions we use. So for the average GPA, we'd get the mean of the GPA. Max GPA, we'd just get columns of the maxes, and count wise, yeah. perfect. Excellent. That's what I was looking for. So guys, जब मैं ऐसे इसको assign करती हूँ, तो वो essentially उस column का name assign कर देता है उसको. And then you always give it as column, comma, the aggregation operation that you want to perform on that column. That's the cool thing about group by. You can do multiple operations at once.
सो अगर आपको इस तरह का कमांड दिया हो तो आपको उसे डिसाइफर करना ज़रूर आना चाहिए. And then I have another command, a fairly similar command, लेकिन अब मैं grouping कर रही हूँ on multiple columns instead of one. So again, take a few seconds and think about what this should do for you. Okay, can someone comment on the expected functionality of this command? तो आपके पास इंडेक्स 2 बनेंगे, 2 कॉलम्स का इंडेक्स बनेगा. Mm-hmm. फर्स्ट विल बी इंस्ट्रक्टर, फिर डिपार्टमेंट, और फिर उसके बेस पे उनके आगे 2 कॉलम्स और बनेंगी, असाइनमेंट स्कोर का मीन और फिर अटेंडेंस का मीन. Excellent, spot on. ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है मल्टी इंडेक्स वाली. So guys, let's recall कि मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम आपके पास वो होता है जिसका इंडेक्स is composed of multiple columns at once or multiple entries at once. So यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स और डिपार्टमेंट्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके अगेंस्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए मेरे पास इंडेक्स की यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी. सो आई हैव डॉक्टर फातिमा कॉमन कॉमा बायो, डॉक्टर फातिमा कॉमा CS, डॉक्टर फातिमा कॉमा मैथ, and then I have Dr. Iqbal comma CS, Dr. Iqbal comma math, and so on and so forth. And ये नाम मैंने खुद assign किए थे. So I have the average assignment score and the average attendance for each unique instructor for each unique department. Are there any questions at this point? So it's like, essentially what happens जब आप group by call करते हैं, so immediately it takes your data frame and splits it into multiple data frames. So for instance, if I'm grouping by department और मेरे पास 3 unique departments exist करते हैं अपने data set में, so वो immediately मेरे data frame को break down करके 3 sub frames बना देगा. फिर हर सब फ्रेम के ऊपर I am doing a certain aggregation operation on a certain column or on a certain set of columns. In this case, I am aggregating on the basis of 2 columns. So initially उसने इंस्ट्रक्टर की बेसिस के ऊपर जितने यूनिक इंस्ट्रक्टर्स थे उतने यूनिक डेटा फ्रेम्स बना लिए. In this case, 3, one for each of my 3 instructors. Then her subframe को उसने डिपार्टमेंट की बेसिस पे ब्रेक डाउन किया. पहले सबफ्रेम के अंदर I had 3 unique departments, तो उसने 3 सब frames बना दिए. Second instructor के data frame के अंदर I had 2 unique departments, so I got 2 new data frames. And then on each individual data frame उसने ये operations perform किए. Are there any questions up until this point? Yes, Amna. I have a general question कि like how will we be tested on visualizations वाला part जो like हमें graphs वगैरह करना. That's a good question, बल्कि I was gonna come to it. It completely slipped my mind. क्योंकि ये किसी ने उस form में डाला that I circulated for tutorial contents. Visualizations, lecture 8. So guys, visualizations का code तो हम बिल्कुल भी नहीं test करेंगे. And by that I mean not only कि we will not ask you to write code, but visualizations का code हम आपको interpret करने के लिए भी नहीं कहेंगे. Because the key idea is to help you understand what visualization works best when, and if a certain visualization is given to you, so you have to be able to figure out कि इस visualization के साथ गड़बड़ क्या है. And for that, you must have covered multiple examples in class as well. So you should know we have different categories of plots. I went over that in I think tutorial 3. Yeah, definitely tutorial 3. जिस तरह आपके पास distribution plots हैं, comparison plots हैं, तो you should know कि एक given scenario के against कौन सा plot जो है it will work best for you and why. And if a certain plot doesn't work for you in a given scenario, you should be able to tell me why it doesn't work. Does that answer your question? Is there And anything like else? how should we practice that? Like, I'm sorry, come again. how should we practice that?
How should you practice that? आप एक दफा अच्छी तरह go through करें lecture 8 की slides को. If I'm not wrong, so lecture 7 की slides में भी यही content covered होगा and maybe like a part of lecture 9. उसके बाद go over the tutorial contents again. Then go over the past paper that I've given you. I'm not लेकिन ये sure, but I टेस्ट तो think होगा। yeah, बल्कि visualizations की definitely examples past paper में भी हैं. Okay, there should definitely be one ungraded homework जिसमें visualizations का content भी होगा. Go over all of those, and if there's any confusion, तो just reach out to me. Are there any other विजुअलाइजेशन questions? Yes. कोड तो टेस्ट नहीं होगा ना इसका, सीबॉर्न नहीं और नहीं वो कोड बिल्कुल भी नहीं टेस्ट होगा. Not ये तो Seaborn, not Matplotlib, not Pandas for ये visualizations. बस कॉन्सेप्ट ही होगा। Yep, absolutely. Okay, so for each instructor, show both the average GPA of their students and the number of courses that they teach. So I'm just gonna copy this command over here. So group by instructor, हमें average GPA चाहिए. So GPA, mean, and then you want the count of courses. All right, with that, let's move on. What does the following command do? ये एक बहुत important command है. I've seen students struggle with this concept every now and again as well. Guys, take a few seconds and really think about what this will do for you. I don't want the expected output. Obviously, how are you going to immediately compute that right now? But you should know कि ये code exactly क्या कर रहा है आपके लिए. All the departments just average GPA is greater than 3.5. Um, थोड़ा सा आप इस पे और elaborate करें. All the departments जिनका average GPA is greater than 3.5, क्या ये उन departments के names return कर रहा है, उन departments की सारी details return कर रहा है? What exactly? True though, आपने filter condition को बिल्कुल ठीक elaborate किया है, but what तो वो exactly? डिपार्टमेंट को will make the department the index पर. Make the department the index. See, that's where you're wrong. This is a common misconception. So guys, यहाँ पे हम कर रहे हैं filtering by grouping. So essentially होता क्या है? Let me just show you. Students department dot value counts. I hope everyone knows value counts क्या करता है. So I have 4 unique departments in my students data frame: math, bio, CS and EE. हर डेटा फ्रेम के हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट उसने मुझे बताया कि कितनी यूनिक एंट्रीज हैं. सो इमीडिएटली व्हेन आई ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो ये मेरे इनिशियल डेटा फ्रेम को 4 डेटा फ्रेम्स में स्प्लिट कर देगा, वन फॉर ईच डिपार्टमेंट. फिर हर डेटा फ्रेम के अंदर ये जीपीए का मीन कैलकुलेट करेगा. सो बेसिकली द मीन जीपीए फॉर ईच डिपार्टमेंट. फिर ये देखेगा कि कौन से डेटा फ्रेम्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मीन जीपीए 3.5 से ज्यादा है. सपोज के बायो एंड कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में दिस इज ट्रू ओनली. सो ये सिर्फ उन रोज को फिल्टर आउट करेगा वेयर द डिपार्टमेंट इज आइदर इक्वल टू बायोलॉजी और इट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस. I will just quickly repeat myself once more because this is a common misconception. First, it will break my data frame down on the basis of department and 4 subframes banenge. हर subframe के अंदर it will calculate the average GPA and then it will check कि किन data frames के अंदर the average GPA is greater than 3.5.
एंड फिर ये उन डेटा फ्रेम्स को आपस में कंकैटिनेट करके रिटर्न कर देता है. सो इसेंशियली अगर सिर्फ बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एवरेज जीपीए वाज अबव 3.5, so this will act like a simple filter condition where the department is either biology or computer science. In this case, well, interesting, no department has an average GPA greater than 3.5 or 3. 2.5 देख लेते हैं. Yeah, 2.5 पे हमें सारे डिपार्टमेंट्स मिल गए हैं. थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके भी देख लेते हैं. Yeah, I think since the data is systematically generated, तो ये इसमें है problem. But are there any questions at this particular point though? Please note how this is not giving you the output that group by gives you. It's just giving you the output that filtering gives you. Are there any questions? Can you please explain the output again? Like it will return all the rows जिनका mean जो है वो 2.8 के ऊपर होगा. अच्छा, ये मैं आपको एक दफा दिखाती हूँ. स्टूडेंट्स डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डॉट ग्रुप्स. इसके लिए तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा. एनीवे, लेट मी जस्ट टेल यू वैसे ही कि ये आपके जो स्टूडेंट्स का डेटा फ्रेम है उसे 4 डेटा फ्रेम्स में स्प्लिट करेगा. एक डेटा फ्रेम होगा जिसमें सिर्फ द डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथ, उसमें 9 रोज हैं. देन बायोलॉजी वाले डेटा फ्रेम में 6 रोज हैं. सीएस वाले डेटा फ्रेम में 4 रोज हैं एंड डबल ई वाले डेटा फ्रेम में सिर्फ 1 रो है. फिर हर डेटा फ्रेम के अंदर वो एवरेज जीपीए कैलकुलेट करेगा. सो उसके पास एसेंशियली मैथ डिपार्टमेंट का एवरेज जीपीए आ जाएगा. देन उसके पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, डबल ई का, इन सब का एवरेज जीपीए आ जाएगा. I just wanna do this over here as well. So I think that that would help. Look, ये उसके पास एवरेज जीपी आ गया हर डिपार्टमेंट का. अब अगर मैं कंडीशन लगाऊं इज ग्रेटर देन 2.91, तो टेक्निकली दैट्स ओनली ट्रू फॉर बायोलॉजी एंड मैथ. तो ये फिल्टर आउट करके सिर्फ वो वाली रोज देगा जिसमें द डिपार्टमेंट इज इक्वल टू बायोलॉजी और द डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथ. Does that make sense? सो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बट हम ग्रुपिंग को सिर्फ फिल्टरिंग के लिए लेवरेज कर रहे हैं. आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? ग्रुप बाय वाला क्यों नहीं शो करता फिर आउटपुट? आई एम सॉरी, व्हाट? मतलब फाइनल आउटपुट ग्रुप बाय वाला क्यों नहीं है, मतलब जो हाँ, ऊपर ये है? देखें, जब आपने सिंपल ग्रुप बाय किया तो उसके बाद मैंने एक कॉलम या एक सेट ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट किया और कोई एग्रीगेटर लगा दिया. इसमें मैंने कुछ भी सिलेक्ट करके उस पे एग्रीगेटर नहीं लगाया. इसमें मैंने कमांड डॉट फिल्टर की यूज की है. तो दिस इज जस्ट हाउ डॉट फिल्टर वर्क्स. सी, मैं कोई कॉलम नहीं सेलेक्ट कर रही, उस पे कोई एग्रीगेटर नहीं लगा रही. दिस इज द डिफरेंस इन द टू कमांड्स. तो लेट्स से अगर एक बायो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, उसका जीपीए 2.5 है, तो उसका आएगा? आई एम सॉरी, बायो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है जिसका जीपीए 2.5 है. द थिंग इज जी. कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट बायो डिपार्टमेंट का है. एंड ये कमांड एग्जैक्टली कह ये रहा है मेरे कंपाइलर को कि सिलेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स जो उन डिपार्टमेंट्स में से हैं जिन डिपार्टमेंट्स का एवरेज जीपीए 2.91 से ज्यादा है. अच्छा अच्छा. मेक लेकिन सेंस? स्टूडेंट का जीपीए तो कम है ना, वो 2.5. स्टूडेंट का जीपीए कम है लेकिन स्टूडेंट एक ऐसे डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है जिस डिपार्टमेंट का एवरेज जीपीए इस कंडीशन को पास कर रहा है. सो इसेंशियली ये सिर्फ फिल्टरिंग करने का तरीका है. इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ फिल्टरिंग. Okay, are there any further questions? Shall I move on? Okay, I'm just gonna show you guys one more example of this. Filter only those courses where the average assignment score is greater than 70.
सो मैं ग्रुप बाय करूंगी कोर्स नेम के ऊपर. एक्चुअली हमें डेटा फ्रेम देख लेना चाहिए. So df dot group by course name and then filter मैं लगाऊंगी for the assignment score, and the average assignment score has to be greater than or equal to 70. Unfortunately ये किसी भी course के लिए true नहीं था. Maybe if I decrease the value, so it will give me some output, as we can see. Okay, we're gonna move on to pivot tables. I have two examples over here. पहले आपके पास एक piece of code है and you should be able to tell me what this code is doing for you. A pivot table is one of those commands जो data frame पे call नहीं होता. आप pd.pivot table करते हैं और उसको pass आप data frame करते हैं as the first argument. Then I select the values. Values वो चीज़ें essentially what does it mean to pivot your data? You are just viewing your data from a different angle. आप सिर्फ उसके व्यू के ऊपर वर्क कर रहे हैं. जो चीज़ आप पिवट टेबल में करते हैं वही चीज़ आप ग्रुप बाय से भी कर रहे हैं. The only difference is the difference in view. Let me give you a simple example of this. जिस तरह आपके पास ये वाला व्यू है, तो अगर मैंने सिर्फ एवरेज असाइनमेंट ली हुई है, फॉर इंस्टेंस असाइनमेंट का एवरेज है सिर्फ लाइक दिस, तो इसेंशियली अगर मैं इसको पिवट करूं तो जैसे इंस्ट्रक्टर नेम्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे कॉलम की जगह, एवरेज असाइनमेंट वैल्यूज में आ जाएगा और रोज के अंदर डिपार्टमेंट रह जाएगा. बट लेट्स लुक एट दैट थ्रू आवर एग्जांपल नाउ. सो वैल्यूज के अंदर आई हैव द असाइनमेंट स्कोर, इंडेक्स में मेरे पास डिपार्टमेंट है, एंड देन कॉलम्स के अंदर आई एम सेलेक्टिंग ग्रेड एंड आई एम एग्रीगेटिंग यूजिंग मीन. So look at the results. This is what it did. उसने grade की unique values ली, हर unique value के against एक column create कर दिया. Department की unique values ली, हर unique value के against row create कर दी. So if I ask you what 60 means over here, so 60 is just the average जो average assignment score है for the grade B. जिन students का B आया in the CS department उनका average assignment score 60 है. You should know how to interpret these values essentially. Does that make sense? So जहाँ पे missing है, what does that mean? It means कि double E department में कोई ऐसे students नहीं थे जिनका B grade था. So you know you're doing this to gain insights from your data eventually. Similarly, you can show both the mean and max assignment scores by, इसको actually हम एक दफा try करके देख लेते हैं, using the course name and the instructor. I wanted to give you guys some time to think about this as well. Unfortunately, though, we are slightly short on time, so I'm just gonna add this. Index में हम course name डाल देते हैं, column में I can add the instructor, and this is what I was looking for. So essentially मैं इन्हें flip भी कर सकती हूँ. I can just put my instructor over here. It just flips my view, right? It is still doing exactly the same thing for me. It just flips my view now. See, exactly the same output otherwise. With that, I'm gonna move on to word string operations and regex because I do want to spend a few minutes over here. List all math department students enrolled in courses with data in the name. So df, सबसे पहले what are we doing? We are filtering out students जिनका, हमें df view कर लेना चाहिए. Department equals math. अब I will have an aggregated condition. So ये तो मेरी first condition थी. मैंने filter out कर लिया उन students को जिनका department was math. And now I have to check the course name.
So इसके लिए you have a string operation, and just to recall, जब भी आप कोई string operation use करते हैं तो you have to write .str before performing that operation. So .str dot, and the string operation that we will use over here is contains data. Are डॉट there any इंक्लूड क्या करेगा? questions? I'm sorry, what? डॉट इंक्लूड Dot include? I'm not sure that that's a valid command actually. Yeah, dot include is not a valid command. So सिर्फ वही string operations आप लोग देखें जो covered हैं. Dot str dot big starts with, ends with, contains, and extract. I think more or less that's it. ये सिर्फ 4-5 string operations हैं जो हमने cover किए हुए हैं. या len covered है. Dot str dot len. So for instance, वो इस तरह work करता है. Double equals 3. ऐसा कोई भी कोर्स नहीं था जिसके कोर्स नेम में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स थे. 5, 10. So 10 के लिए I have algorithms. Does that make sense? Length will not include the space, right? Like AI fundamentals, it will No, not no, include. absolutely. Space को भी count करता है क्योंकि space is a valid character ना. Okay, okay. So ये space को भी count करेगा बल्कि that's an important point. ठीक है, let's move on. Yeah, so as far as regex is concerned, इस tutorial में I have added this simple key for you. इसके अलावा make sure that you definitely do go over what is in your lecture, जो भी commands covered हैं. More or less, I don't think कि इसके अलावा कुछ है, although this pretty much sums it up. Let me tell you guys. Dot का character आप use करते हैं as a wild card. Dot means कि there can be anything in place of that. जिस तरह आपने ये वाला regex लिखा w dot dot kly, तो ये वीकली को भी मैच करेगा. ऑन द अदर हैंड वीकली को मैच करेगा अगर कोई दो और कैरेक्टर्स हैं WPPLY, उसको भी मैच करेगा. एंड अगर कोई आपके पास जैसे स्पेशल कैरेक्टर है लाइक एम्परसन, तो ये उसको भी मैच करेगा. Doesn't it imply that there should be just one अच्छा, any ये जो character? एग्जांपल है मैंने इसमें जूम इन किया तो आई कैन सी के इसमें 2 डॉट्स हैं, Okay, okay. इसीलिए. बट या एक डॉट का मतलब है कि सिर्फ एक ही रैंडम कैरेक्टर हो सकता है. And then there is this particular cone which just means begins with. So अगर मैं ये लिखूं for instance ly, तो ये वो वाली strings देखेगा that begin with ly. और for instance the, so ये उन strings को match करेगा that begin with this word. एंड उसके आगे कुछ भी आ सकता है. ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में यू गिव अ कैरेक्टर सेट. सो जिस तरह यू हैव 0 to 9, उसी तरह आई कैन हैव स्मॉल a to small z, कैपिटल A to कैपिटल Z. ये स्ट्रेट लाइन यूज होती है फॉर और, जिस तरह ये वाला वर्ड लिखा हुआ है हाई एंड देन स्ट्रेट लाइन एंड अगेन समथिंग्स अप विद माय कीबोर्ड लाइक आई टोल्ड यू गाइस. तो इसका मतलब है कि ओनली वन थिंग ऑन ईदर साइड ऑफ दोज can be matched. Both of them don't have to exist within your string. इन दोनों में से किसी एक के साथ भी ये match हो जाएगा. Plus means that the whatever is written can be repeated once or more. Let me tell you what this means. जिस तरह ये example है me plus, तो I will have you guys note कि ये plus सिर्फ e के ऊपर apply होगा. मतलब this will match things like these, if that makes sense. It also means कि इसने एक दफा तो minimum भी repeat होना है because it means once or more. If I want कि me पूरा repeat हो तो मुझे brackets के आगे plus लगाना पड़ेगा, in which case this is the kind of thing that it will match. This is a very important difference, and often people get confused about this. And then steric works exactly the same way, but steric में अगर 0 times भी repeat हो तो that is also acceptable. Like अगर सिर्फ m है तो steric उसको भी capture कर लेगा. And then
For curly brackets, you have an exact number of times. For instance, अगर मैंने एक particular यही word select किया है ME and आगे मैंने 3 लिखा है तो ये exactly सिर्फ इसी को match करेगा and nothing else exactly 3 times. And a backslash is of course used for any special characters or any character operations. I will show you 2 character operations. जिस तरह आप इस कोन को use करते हैं to denote the starting of a string, उसी तरह you use a dollar sign to denote that it has to be at the very end of the string. अब backslash W आपको पता होना चाहिए, it will match any word. This is the equivalent of any capital letter, any small letter, or any digit. Similarly, backslash D is something that will only match a digit. With that, I want to show you one example. Let's quickly think about what this command will do for you. df.head हम देख लेते हैं. Can someone tell me what this command will do for you? कोर्स नेम के अंदर या एआई होना चाहिए या एमएल होना चाहिए. Absolutely perfect. So ये और है essentially. It means कि AI होना चाहिए या ML होना चाहिए. All right, that is how that will work for me. You will notice कि जब हम str contains को हमने ऊपर भी use किया, which is like why I intentionally added it over here. Yeah, there we go. So जब मैंने simply data check करना था कि name में है या नहीं है, तो मैंने regex को true नहीं set किया. जब मैंने कोई regex इसे pass किया, तो I have had to manually set this flag to true. Okay. Write code to extract username from email. I will remind you guys कि इसके लिए we have an extract operation. So एक दफा students का data frame देख Can you लेते go हैं. to the previous question? Yeah, sure. This one? Yeah. Uh, we could have just done AI and then the slash and ML, not the straight one. Like, हमने वही किया है. Look, AI and then straight line and ML. yeah, like regex equals true is important. हाँ, regex equals true is important. Yeah, because ये regex है ना. अगर मैं इसमें regex equals true नहीं करूँगी, तो फिर क्या होगा? वो इस string का exact match Okay, okay, ढूंढेगा. okay, okay. Makes sense. So, like in this case, it would give an error. In this case, it ran perfectly fine. I think शायद by default it's set to true in that case. I was interestingly not familiar with that. जब मैंने इसको remove किया है, तो उसने मुझे exactly same functionality दी है. इसका मतलब है that this flag is true by default. Okay. Minor things that happen with versioning. अगर मुझे नहीं याद था, तो definitely we don't expect you guys to remember either. Okay, so username में से आपने extract करना है. Sorry, email में से आपने username extract करना है. मुझे तो students की email ही नहीं दी हुई. That's interesting. Very interesting. Guys, I'm sorry. I will definitely update this data frame. I want to give you an example though. I don't want to leave it like this. So, for instance, shizausher@gmail.com. I would want to extract this part of it. Let me give you another example. abc.xyz lums.edu.pk. So I would want to extract this entire thing abc.xyz. मतलब essentially username is whatever occurs before the @ and इसके अंदर special characters भी हो सकते हैं, numbers भी हो सकते हैं. So how will I go about it? Suppose आपके पास email exist करता था. Suppose for the sake of our example, I will definitely update this data set before I release it. So email dot str dot not contains extract. Extract के अंदर I will pass a regular expression and I will want to check against the starting of my string. Starting में
I can have Actually, I can have a small letter, I can have a capital letter, I can have a digit. And then इसको हम wild card दे देते हैं for any special characters. I will also give it a plus sign because that means कि जितने मर्जी characters इस set में से repeat हो सकते हैं within this character set. And then at the rate because I just want whatever is behind at the rate. Okay, I'm pretty sure that should work fine, but when I update your data set, so we can test it out as well then. Are there any questions at this point? Because this is important. इसमें तो एट द रेट ऑफ भी आ जाएगा ना जो स्पेशल कैरेक्टर है हाँ उसके मतलब कि you are right. Suppose मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ डॉट आए एक्चुअली तो मुझे इसको लॉजिकली अब मेरे कीबोर्ड के साथ कुछ ऐसा मसला है कि ये मुझे बैकस्लैश भी नहीं डालने दे रहा बट आई वुड वांट टू ऐड दिस विद अ बैकस्लैश एसेंशियली because I wanted to consider dot only. Technically, or koi special characters nahi hote. You can have a dot, you can have um your simple characters, or you can have digits. Make sense? Are there any other questions at this point? So dot can appear multiple times. Yeah, dot can appear multiple times. I will reiterate. अभी मैंने दूसरा slash डाला है because my Yeah, backspace makes wasn't sense. working. But yeah, ये backslash के साथ आएगा. It actually means कि इस character set में से कुछ भी आ सकता है multiple times. Plus का मतलब है कि a minimum of one character तो होगा ही इस set में से. Yeah. Interestingly, you हम guys, I will ask you guys this. क्या ये इसको भी मैच करेगा इसमें से डॉट एक्सट्रैक्ट करके देगा करेगा या एब्सोल्युटली करेगा सो गाइस अगर इस तरह का रेगेक्स दिया हुआ हो आपको तो यू शुड नो कि वो क्या मैच करके दे रहा है एज वेल फ्रॉम योर स्ट्रिंग अगर मेरे पास हम इनफैक्ट ये वाला स्ट्रिंग हो जस्ट अ सेकंड तो ये दो चीजें एक्सट्रैक्ट करके देगा डॉट को भी एक्सट्रैक्ट करेगा एंड ए बी सी को भी एक्सट्रैक्ट करेगा यस अब आप बताएं हमने वो जो क्लास में HTML वाली एग्जांपल की थी कि we want the things enclosed in the two angle brackets. So हम वो एक एक था क्वेश्चन मार्क वाला कि stop at the first instance of this symbol. तो हम वो नहीं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते कि stop at the first instance of ampersand. हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यू आर राइट although to be fair to me I didn't realize कि आप लोग क्वेश्चन मार्क को भी कवर कर चुके हैं इसीलिए ये टेस्ट नहीं होगा at this point at least all right shall we move on then okay, let's move on अगर इसमें हम yes प्लस की जगह स्टार लगा देते तो वो अच्छा प्लस की एम्प्टी जगह स्ट्रिंग भी स्टार दे लगा देता दें तो उसमें असल में ये मसला है कि यहाँ पे वो नल मैच करके आपको रिटर्न कर देगा लाइक इसको वो मैच करेगा so like we want to make sure कि at least एक character तो हो at the rate से पहले make sense सही okay so let's think about what the following command does and I think that it is fairly simple one line explanation anyone Email must contain at gmail.com. yeah so essentially हम क्या कर रहे हैं हम validate कर रहे हैं कि email correct entered है या नहीं है against Gmails so let's quickly view ये वाला data frame so we can look at our last question आपने वो वाले स्टूडेंट्स फिल्टर आउट करने हैं जिनके नेम के अंदर कोई डिजिट है सो हाउ विल आई डू दिस आई विल गिव यू गाइस अ क्विक फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस डॉट एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे okay that's enough let's write our regex down Slash D.
Oh सॉरी डॉट एक्सट्रैक्ट नहीं यूज करेंगे, डॉट कंटेन्स यूज करेंगे. वी वांट टू फिल्टर आउट ऑल द स्टूडेंट्स जिनके नेम के अंदर कोई भी डिजिट है. So yeah, slash d. Sadly, my slash is still not working, so there's no way for me to test this out. Well, technically, there is a way for me to test this out. I just want to check कि कोई digit exist करता है या नहीं करता. So इसके आगे हम प्लस डाल देते हैं. What will this do? अगर एक digit या एक से ज़्यादा digit exist करता होगा तो ये match कर देगा. In this case, all the values are true because सारे students के name के आगे exactly यही है. What would we have done if we wanted the names? I don't get your point. Names तो आपके पास हैं पहले in your data frame. What are you looking for? Like over here, every name includes a digit, but like if there were names which didn't, and we just wanted those specific names which actually include the Ah, digit. I see your point. तो ये तो Yeah. काम बहुत आसान है. Make sense? Okay. हम Yeah. essentially वो जब आप उसको पास करेंगे तो ये boolean array return करता है like any other Yeah. array. Yeah. या तो आप उसको पास कर देंगे यहाँ पे. Guys, that's actually going to be all about strings for now. But given that our time was fairly limited, I will again iterate कि please आप लोग strings के questions को regex के questions को tutorial 4 में एक दफा जरूर visit कर लें if you haven't already. I will remind you that we had two data frames over here. So आपके पास enrollments का data frame था. Then आपके पास students का data frame था जिसमें unfortunately email missing था. And then lastly you had, what was our last data frame? Courses. Courses. Yeah, thank you. So ये हमारे पास 3 data frames थे. हम essentially एक ही row print कर लेते हैं. But I just want to remind you what each of these contain so that you can look at these questions in front of you. I just want you guys to recall inner join, left join, outer join because it's important to highlight कि ये tutorial 5 में की recording में available था. There was an additional, I think, 20-ish minute recording that I uploaded with this, and then I made an announcement about it. And I will reiterate this once again because joins are very important. बट जॉइंस का कोड आपने लेक्चर के अंदर नहीं एग्जैक्टली इतना एक्सप्लोर किया तो जस्ट मेक श्योर यू रिविजिट दैट कंटेंट वंस एज वेल. Essentially, you should be familiar with four kinds of joins. You have an inner join. Inner join में वो rows select होती हैं. By the way, join आप एक particular column के ऊपर या एक set of columns के ऊपर कर रहे हैं. So when you do an inner join, तो ये वो value select करता है जिनके against common entries हों दोनों data frames के अंदर. There's one on the left and then there's one on the right. So when I run this command, it just filters out technically all the students who have enrollments, who exist in the enrollments ka data frame. Then you have a left join. इसमें जो data frame आप left पे रखें, for instance, in this case मैंने left पे actually students को डाल दिया है. तो उसमें से ये सारी unique values use करता है for the set of columns or column that you've added. So ये सारे students को choose करेगा from the students data frame, and जिनके against enrollments में entry होगी उनकी rows तो as it is आ जाएंगी enrollments में से. जिनके against entry नहीं होगी उनमें enrollments में whatever additional columns you have they will just be set to null. The same way you have your right join as well. It's just that जो काम left के साथ हो रहा है वो right के साथ होता है, exactly vice versa. Oh, this data frame is actually too big to show you. What if I take 10 onwards? Yeah, this is what I wanted to show you. ये अगर हम 19th entry देखें
तो यू विल सी कि इसके 4 कॉलम्स नल हैं। ये 4 वो कॉलम्स हैं जो राइट वाले इनरोलमेंट्स वाले डेटा फ्रेम से आ रहे थे। इसेंशियली दिस मीन्स कि स्टूडेंट 6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था इन द इनरोलमेंट्स डेटा फ्रेम। देयर वाज नो स्टूडेंट अगेंस्ट दिस स्टूडेंट आईडी. This is very important to understand. And this you should be able to run yourself as well. And an outer join is just like the union of left join and right join. So दोनों sides पे जो missing entries है वो null रहती हैं and all the rest of the rows are returned to you. Perform a left join of students with enrollments. ठीक है हम try करके देख लेते हैं. Result equals pd dot merge. So students comma enrollments. How equals left. Oh, हमने select नहीं किया कि किस key के ऊपर merge करना है. So student ID के ऊपर merge करना है. How equals left, and let's review our, sorry, it's not results, it is result. This is our result. Now, I essentially want to check how many students have no enrollments. So, this is what I will do. Enrollments में से मेरे पास कौन सी rows आ रही थी essentially? I just quickly wanna recall. Yeah, course ID. So, for instance, course ID enrollments में से आ रही है. So, I can just check course ID dot is NA. बल्कि आप लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो यू डोंट इवन नीड टू चेक फॉर कोर्स आईडी, यू कैन जस्ट डू डॉट इज एन ए डॉट सम एंड दिस टेल्स यू कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपके पास एंट्रीज मिसिंग है. सो दिस मीन्स कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसी रो है. आई जस्ट हैव वन सच स्टूडेंट. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट ओवर हियर, आई पुट दिस इन हियर बिकॉज किसी स्टूडेंट ने एग्जैक्टली डेटा क्लीनिंग का लिखा फॉर कोड for this tutorial, and I will iterate okay guys, we will not test cleaning in code at this point. Just these pandas commands in code, इनके ऊपर आपकी grip strong होनी चाहिए. With that, that will be all from my side. Are there any questions? Yes, is there a question? Yes, Arib, go ahead. So, right before the quiz, we just need to, let's just say we need to go over tutorial 4, tutorial 2, 4 because of regex. Basically, we need to cover pandas and regex. And Absolutely. This is from a practice point of view. इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी. I just reiterate this based off of student responses. Since मुझे regex के बारे में काफी students ने कहा and I could only briefly go over it right now. So I will highly encourage you to go back to that tutorial and उसमें आप regex को एक दफा देख लें. We have several examples over there. We have several tough examples over there as well, in fact. Tutorial 2 के ऊपर I lay my emphasis for any student who wants to practice pandas. You're given a problems notebook and you're given a solutions notebook. दोनों खोलें side by side, try solving a problem. If you're unable to, look at the solution. This is how you will learn pandas. For everything else, I believe that your lectures are sufficient at this point. like probabilistically, what can come out of probability? What should be our baseline for math? That is very hard to comment on, but I'll tell you what. अगर आप math की बात करें तो there are some things that have been covered in class. You have certain examples वगैरह. For instance, आपने sampling के अंदर probability की कई examples देखी. I would encourage you to go over that. And then there are some things जिनके लिए you have certain formulations वगैरह discussed, like the Bayes theorem. शायद उसकी एक आधी example भी covered है. Go over things like that. This paper
can logically not be very math intensive because math ज़्यादा module 3 में cover होता है in causal and statistical inference. So exam 2 is going to be fairly heavy on math. लेकिन exam 1 में you don't have to worry about math a lot. It's more pandas intensive. Is the deadline for the write up still the same? Because midweek है चल रहा है. The thing is कि I cannot extend a deadline on my own, but काफी students ने request की है. Let me discuss it with Dr. Mubin. We'll let you guys know.